Hello everybody, I am Manoj Kumar Pradhan, teacher in social studies. On behalf of Odisha Adarsha Vidyalaya Sangathan Bhubaneswar, Odisha, I welcome all to this video series of social science. Today we will continue the video of class 10th geography chapter 3. Topic is water resource. We have already completed the first and second video of this chapter. Now we will start up the third part of this video. In this video, we will discuss the multi-purpose river project and integrated water resource management. So let's start the video. Water resource key points to be discussed. There are four key points to be discussed in this video. First key points, hydraulic structure in ancient India. In this session, we get information regarding the dams, lakes and irrigation system of ancient India. Second key points, dams and its types. In this session, we know the meaning of dams and classification of dams. Third key points, multi-purpose project. In this session, we will discuss about the use and importance of a multi-purpose river projects. Fourth key points, problems of a multi-purpose project. In this session, we will understand the limitation of a multi-purpose project. Hydraulic structure in ancient India. During the time of Chandragupta Maurya, dams, lakes and irrigation system were extensively built. Sudarshan Lake in Gujarat was constructed during the rule of Chandragupta Maurya. In the 1st century BC, Sringavirapura near Prayagraj had a sophisticated water system channeling the flood water of the river Ganga. This was the tank. This was the picture of the tank where water is stored. Look at the slides how the flood water of river Ganga was stored in the tank through the channel, and this tank's water is used for irrigation purpose in future when water is not available. Evidence of a sophisticated irrigation work have also been found in Kalinga, Odisha, Nagarjunakonda in Andhra Pradesh, Bennur in Karnataka, Kolhapur in Maharashtra. In the 11th century AD, Bhopal Lake, one of the largest artificial lake of its time, was built. These are the image of Bhopal lakes. In the 14th century AD, the tank of Hauj Khas in Delhi was constructed by Iltutmish, the Sultan of Delhi, for supplying water to Siri fort area. These are the images of Hauj Khas. Dam. What is dam? A dam is a barrier across flowing water that stops or directs the flow of water, which is creating a reservoir, lake or impoundment. डैम्स मीनिंग हिंदी में बांध कहा जाता है। बांध बहते जल को रोकने के और दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की जाती है, जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जलभरण बनाती है। अधिकतर बांध में एक ढलाव हिस्सा होता है जहाँ से जो जल होता है रुक रुक कर बहता है। ये जो इमेजेस है, लुक एट दिस रिजर्वर। रिजर्वर मीनिंग जलाशय कहा जाता है, लेक मीनिंग झील होता है और इम्पाउंडमेंट मीनिंग जल भरण होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स. Dams are classified according to structure, intent, purpose or height. On the basis of a height, small dam, medium dam and large dam. On the basis of materials, timber dam, embankment dam and masonry dam. This is also the image of a embankment dam. जो मटेरियल यूज होता है लकड़ी से होता है टिम्बर डैम। एम्बैंकमेंट डैम मीनिंग जो लोकल जो भी मिलता है, मिट्टी हो या मिनी स्टोन हो, इनमें बनाया जाता है, रेत से बनाया जाता है। और मेशनरी डैम जो होता है वो कंक्रीट से बनाया जाता है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. Traditionally, dams were built for irrigation purpose only. Today, dams are built for various purposes. Hence, these are referred as multi-purpose project. Different function of a multi-purpose projects: irrigation, electricity generation,
flood control, recreation, inland navigation, fish breeding, water supply to domestic and industry. So, in modern day, dams are used for a different purpose. So, these are known as the multi-purpose river projects. Multi-purpose projects. Some facts. In the Satluj Beas River Basin, the Bhakra Nangal project was being used both for hydel power production and irrigation. Similarly, Hirakud project is the Mahanadi Basin integrates conservation of water with flood control. Jawaharlal Nehru proudly proclaimed the dams as the temple of modern India. The reason it is would integrate development of agriculture and the village economy with a rapid industrialization and growth of the urban economy. Disadvantage of a multi-purpose project. Despite so many merits, there are so limitations also in multi-purpose river projects. Multi-purpose projects affect the natural flow of water. It causes the excessive sediments and the bottom of the river which makes stream bed rockier. It causes the poor habitat of aquatic life. Multi-purpose project causes no migration of aquatic fauna. The dam submerged the vegetation and soil at the both of the bank of the river and causes floodplain. Multi-purpose project also cause new social movements like Narmada Bachao Andolan and Tehri Dam Andolan. Salination of a soil due to excessive commercialization, farming and irrigation. Increase the social gap between the richer landowner and the landless poor. Rise interstate water dispute with sharing the cost and benefit of a multi-purpose project. तो हमने देखा जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है इनमें से बहुत सारा मेरिट होता है, लेकिन आजकल कुछ समस्या भी देखने को मिलता है। जैसे कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट में क्या होता है, जो हमारा नदी का नेचुरल फ्लो होता है, बहाव होता है, उसको वो रोकता है, ठीक है। और क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जब बहाव होता है, सेडिमेंट्स मीनिंग जो नीचे वाला पथरीला बन जाता है, उनका जो निचला बेड होता है वो पथरीला बन जाता है नदी का। और क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल जलचर प्राणी होते हैं उनके लिए भी खतरा होता है, क्योंकि वो जो फौना रहते हैं एक्वाटिक फौना वो माइग्रेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि नदी के कुछ जगह के कुछ दूर में क्या बनाया जाता है, सब डैम बनाया जाता है। ऐसे बांध जब बनाया जाता है तो क्या होता है कि वो कुछ लिमिटेशन जगह में ही वो मूवमेंट कर पाते हैं, उनका माइग्रेशन ख़त्म हो जाता है। और डैम की वजह से क्या होता है, हमारा जो वेजिटेशन होता है, जो फॉरेस्ट का और हमारा जो सॉइल है पूरा क्या होता है, सब मर्ज हो जाता है, पानी से भर जाता है। और डैम होने से कुछ ट्राइबल जो होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, वो एनवायरमेंट को बचाना चाहते हैं। और जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनका जैसे कि उनको वहाँ से जगह को छोड़ के जाना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे मूवमेंट भी होता है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, तेहरी डैम आंदोलन ऐसे। और जो डैम को लेकर कुछ स्टेट के बीच और कुछ कंट्री के बीच भी कभी कभी डिस्प्यूट लगा रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा डैम की वजह से हम इरिगेशन करते, इरिगेशन करने से हमारा जो सॉइल का सैलिनेशन क्वांटिटी भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारा सब डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। फेलर ऑफ अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। Most of the objection to the projects arose because of their failure to attain the needs for which they were built. The dams that were constructed to manage flood have triggered flood because of sedimentation within the reservoir. The big dams have often been unsuccessful in controlling flood at the time of intense rainfall. In 2006, Gujarat and Maharashtra faced a massive destruction of live property, and this also led to soil erosion. Sedimentation also meant that the floodplain were deprived of silt, a natural fertilizer, further adding on to the problem of land degradation. This project induced earthquake. It causes waterborne disease and pest and pollution resulting from excessive use of water. A failure of multipurpose project, लेकिन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया था जिस कारण काम के लिए, कभी कभी वो काम फुलफिल नहीं होता है, उल्टा बहुत सारा समस्या क्रिएट करता है। जैसे कि अर्थ कोई कहने का कोई चांसेस है, और ज़्यादातर फ्लड को कंट्रोल करने के लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो बड़े बड़े डैम होता है उनका इतना क्षमता नहीं होता है कि जल को जब फ्लड आता है उसको कंट्रोल कर पाना, तो उसी वजह से भी ज़्यादा फ्लड हो जाता है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में 2006 में हुआ था। तो ये सारा कारण है जो फेलर है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का। सम फैक्ट्स ऑफ अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स।
Let's discuss some other facts. Damodar river is known as the river of sorrow. जो दामोदर रिवर है बिहार अंचल में वो बहता है, इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बाढ़ आता है। बाढ़ आने से क्या होता है, जो धन जीवन जो होता है उसको हानि पहुंचता है, इसलिए उनको दामोदर रिवर को सौर कहा जाता है। The Krishna Godavari dispute is due to the objection raised by Karnataka and Andhra Pradesh government against the Maharashtra government. Sardar Sarovar Dam has been built over the Narmada River in Gujarat. This is one of the largest water resource projects of India, covering 4 states, Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Rajasthan. This project would meet the requirement of water in drought-prone area or desert area for Gujarat. In Gujarat, 9,490 villages and 173 towns, and Rajasthan 124 villages. जो सरदार सरोवर बनाया गया है गुजरात में, इसमें क्या होता है, जैसे कि गुजरात का 9,490 विलेजेस होता है और 173 टाउन को जल सप्लाई करता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, farmers, environmentalists and human rights activists against the Sardar Sarovar Dam being built across the Narmada River in Gujarat. Important question given below are some important questions. Name the environmental movement against Sardar Sarovar Dam. Who proclaimed dam as the temple of modern India? Hirakud Dam is constructed across Dash River. Mention any 3 objectives of a multi-purpose river valley project. 3 mark. Explain any 5 disadvantages of a multi-purpose project. Try to solve the 5 questions. I already explained this answer in my video. So thank you so much to watching this video.